Hare Krishna. Can I have that? Hare Bol. Yes, we have Radhapati Prabhu from the Chapati temple here. So we am requesting him to please. Yes, Prabhuji. Yeah, you just. Yeah, you can just. You'll have to sit. No, I don't need this. I don't need this, but just sit and. Yeah, I can. Yeah, where you are visible. Yeah. Yes. Please, बैठिए. Is it okay if I sit like this? Yes. Please Okay. go ahead. Yes. Like Oh, it's okay now. Just carry on. Go. okay. Yes. Hare Krishna. It is my great privilege to speak in Hindi or English. Anything. Both. It's English. We go both ways. Okay. So it is my great privilege today to be introducing such an internationally known personality as Her Grace Radhika Kripa Mataji, who is a disciple of His Holiness Tamal Krishna Swami Maharaj. My friend Shriman Taresh Thapar, who is initiated as Tamal Madhav Prabhu by His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Today we are meeting in his house for a satsang program, a home program, and we have a few devotees here, as in the Kirtan, and a few other family members and others who have come for this special occasion, because whenever a devotee of the stature of Her Grace Radhika Kripa Mataji comes, it calls for a celebration. Haribol. Because they are loaded with so much of experiences and also with so much of grace of the Lord that they carry. And whenever they say, it directly enters into the hearts of the people who are the listeners, and it transforms their life. So therefore, rather than speaking much on my part, I would rather let her speak and let the nectar flow. Thank you. Hare Krishna. So we thank Prabhuji. He has really come all the way to be here as a part of the program going to be at Tamal Madhav Prabhu's home in Bombay. So I'm in Mumbai right now. So we'll just go live with the session. Hare Krishna. So today the topic is actually I'm here after ये जो प्रभु जी हैं जिनके घर में मैं इस टाइम हूँ ये पंजाबी हैं बैकग्राउंड से and इन्होंने last when I came 8-9 years back he organized a very big program. So I was a part of it and मैंने उस program में I gave a discourse that was appreciated. And then Prabhuji has said that whenever you're back here, do come. तो मैं बहुत सालों बाद इस टाइम बॉम्बे आई हूँ और प्रभु जी से बात करी तो उन्होंने इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज किया जस्ट अ सेशन दैट इज कि सेड जितने लोगों को मैं बुला सकूंगा विद सच अ शॉर्ट नोटिस आई विल ट्राई एंड यस हियर विद यू ऑल वाचिंग ऑन द यूट्यूब एंड फेसबुक वी हैव मेनी पीपल हियर आल्सो. तो आज का टॉपिक जैसे है वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म वाज दैट अट्रैक्टेड हिम टुवर्ड्स मी कि आई वुड वैष्णव टीचिंग्स इन सिख बीइंग पंजाबी ही वांटेड टू नो एक्सप्लोर विद मी कि क्या क्या मैंने बुक में दिया है and how it is कि कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं through the Granth Sahib also. So that is as आप सब जो मेरे से जुड़े हो YouTube, Facebook पे आप जानते हो कि I usually give the quotes from the Granth Sahib, I give the quotes from Gita. तो वो दोनों ही quotes को हम समझ के भक्ति अच्छे से कर सकते हैं और हमारी लाइफ का गोल क्या है हम इस संसार में आए क्यों तो गुरबानी कहती है भई प्रापत मानक देहरिया गोविंद मिलन की है तेरी बलिया अवर काज कीते ना काम मिला साध संगत बज केवल नाम. सो अभी हम कुछ देर से कीर्तन कर रहे थे तो गुरबानी कहती है कि भई प्रापत मानक देहरिया ये मनुष्य देह मिली है अब क्या करने की बारी है अब गोविंद का नाम लेने की बारी है. मनुष्य देह मिली इसीलिए और हम सोचते हैं मनुष्य देह मिली है कि खूब एंजॉय करना है खूब धन कमाए और खूब बड़े 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 आई वोंट से आलिशान बंगलों में रहें पर जरूर रहें अगर भगवान को याद करते हैं तो उनमें रह भी सकते हैं. वो माया नहीं है जहाँ भगवान का कीर्तन होता है. तो सिर्फ हमें यही करने के लिए हम नहीं आए थे हम आए थे भगवान का नाम लेने. तो भई प्रापत मानक देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज कीते ना काम मिल साध संगत बज केवल नाम. और कोई काम जो किए हैं वो काम नहीं आएंगे. इस संसार में हमने बहुत कुछ किया बड़ा नाम कमा लिया बहुत धन कमा लिया बहुत वैभव कमा लिया पर वो अंतिम घड़ी में काम नहीं आएगा.
काम आएगा तो हरि का नाम। तभी गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें सिखों के गुरु हैं, उन्होंने कहा कि भई प्रापत, ये मनुष्य देह मिली है प्रापत का, ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई इट इज कि यू हैव अर्नड इट। ये भगवान की कृपा है जो तुम्हें मनुष्य देह मिल गई है, और 84 लाख योनियों की कीमत देकर तुम्हें ये देह प्राप्त हुई है। और तुमने अब क्या करना है? अब भगवान का नाम लेना है। और किस लिए लेना है और कैसे लेना है? कि मिल साध संगत भज केवल नाम। ये नहीं कहा कि अकेले बैठ के भजना है, कहा है कि साधु के संग में, जो भगवान का नाम जपते हैं उनके संग में, साधना करने वालों के संग में बैठकर जपना है। तो जपने से क्या होगा? कहते हैं सरजाम लाग भवजल के, जन्म वृथा जात रंग माया हेत के। तुम पार निकल जाओगे, इस संसार से पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और फिर क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? ये जन्म जो है व्यर्थ जा रहा है माया के पीछे भागकर। सरजाम लाग भवजल के, जन्म वृथा जात रंग माया हेत के। माया के पीछे जाकर ये जीवन जो है वो, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ। सो हमें क्या करना है? हमें भगवान का नाम लेना है। कहते तुम्हें मनुष्य देह मिली थी, होछे रस तो लिपटायो रे। तो होछे रसों में लिपटा रह गया, तो सिर्फ यही सोचता रह गया कैसे अपनी इंद्रियों को और सुख दूं, और कैसे सुख दूं। आज सुबह आई वाज विद गुरु महाराज, ही वाज गिविंग अ लेक्चर, ब्यूटीफुल श्लोका फ्रॉम 7th canto ऑफ भागवतम, वेयर श्री प्रहलाद प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और कहते हैं कि जो माया में लिप्त लोग हैं उनके लिए नरकगामी होंगे वो, क्योंकि वो भगवान से जुड़ते नहीं है। और भगवान से हिरण्यकश्यप जब पूछता है कि कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है, कौन तुम्हें बचा रहा है प्रहलाद, तुम्हें मारने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कौन है जो तुम्हें बचा रहा है? तो भगवान बचाने वाले हैं। जिस भगवान ने परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ में बचाया है, वही भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान कह रहे हैं कि होछे रस, वही गुरु समझा रहे हैं। गुरु के पास युक्ति होती है। द गुरबाणी, द ग्रंथ साहब एक्चुअली इज फुल ऑफ द युक्तिज। वो गुरुओं की बाणी है। तो गुरु वो होते हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। तो कहते हैं कि जिस कह रहे हैं जिसने गुरु की सेवा नहीं की, वो ठाकुर को नहीं समझ सकता। गुरु सेवे थे ठाकुर जाने। जिन्होंने गुरु की सेवा की है वही भगवान को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि भगवान बड़े मुश्किल है समझना। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये असंभव नहीं है पर मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं मुझे समझना है तो सिर्फ क्या करना होगा? गुरु की सेवा करनी होगी, और शुद्ध प्रमाणिक गुरु की सेवा करनी होगी, मुझ तक आना है तो इसलिए गुरबाणी जो है वो हमें बार बार किस तरफ मोड़ती है? भगवान की तरफ लेकर जाती है। गुरुओं की वाणी है। और अनेक अनेक कथाएं हैं। एक बार गुरु नानक देव जी जो है, कली उनके सामने प्रकट हुआ काले लबादे में। कलयुग सामने प्रकट हो गया, काला लबादा पहना है, और जगह जगह से उसका लबादा फटा हुआ है। तो रोब इज वेयरिंग, उसमें जगह जगह टाकियां लगी हैं। तो टाकियां इसकी सिला गया है, उसको फट गया और उसको वो पैच करके सिल दिया गया। तो मर्दाना साथ में है गुरु नानक देव जी के, और कलयुग सामने आ गया है। और कली कहता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं कि अमृत वेला सचनाओ बढ़ियाई विचार। अमृत वेले में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम लेना है। अब कलयुग सामने आ गया और कली कहता है कोई ना उठे, कोई भगवान का नाम ना ले। कलयुग यही कहता है, कोई विष्णु को याद ना करे, कृष्ण को याद ना करे। मर्दाना साथ में है, और मर्दाने को कहता है कलयुग, तुम्हारे गुरु क्यों भटकते हैं इधर उधर? इनको मैं सोने का महल देता हूँ, सोने का सिंहासन देता हूँ, इनको कहो एक ही जगह टिक जाए, कहीं ना जाए। क्यों जाते हैं इधर उधर? क्यों लोगों को कृष्ण का नाम, हरि का नाम बताते हैं? तो मर्दाना हंसने लगता है। मर्दाना कहते हैं तेरे जो लबादे में तूने जो पहना है उसमें तो जगह जगह से फटा है, जगह जगह से तूने सिला है उसको, और तू बात करते है कि तू सोने का महल देगा मेरे गुरु को। तो वो कहता है मैं क्या करूं? मैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3 साढ़े 3 बजे सबके ऊपर काली चादर डाल देता हूँ, कोई ना उठे, कोई कृष्ण का नाम न ले, हरि का नाम न ले। पर तुम्हारे गुरु जैसे जो भक्त हैं वो उठ जाते हैं और मेरे इस लबादे में छेद कर कर बाहर निकल जाते हैं, और मुझे रोज इसको सिलना पड़ता है। सो दिस इज द ब्रह्म मुहूर्त। कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं वो उस कलयुग को डिफाई करते हैं, वो कलयुग को हरा देते हैं। क्योंकि गुरु ने युक्ति दी है कि अमृत में, अमृत वेले में उठना है। उस समय को ही अमृत कह दिया गया, क्योंकि वो भगवान का समय है। जो 1.5 घंटा पहले उठते हैं सूरज उगने से, वो भगवान के संग में रहते हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। तो ये कहा है ब्रह्म मुहूर्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये शिक्षा गुरु देते हैं। तो युक्ति है गुरु के पास,
श्रील प्रभुपाद ने मंगल आरती दे दी, सबको युक्ति दे दी। मंगल आरती एक युक्ति है, उपाय है। जो ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठते उनको क्या अट्रैक्शन हो गई, डेटीज के दर्शन करो, कीर्तन करो, खूब एंजॉय करो, डांस करो कीर्तन में, और फिर उसके बाद भगवान को जो अर्पण हुई खीर प्रसाद है, पेड़ा प्रसाद है, सुबह सुबह वो मिल जाता है। So there is the feast also early in the morning, dancing, feasting and singing. वो जो सोए रह गए उन्होंने खो दिया, और जो जागे उन्होंने ये सब पा लिया, और साथ में बोनस मिल गया, हरि नाम जप लिया, भगवान मिल गए। तो ये है श्रील प्रभुपाद के पास युक्ति। उन्होंने सबको 4:30 का समय दे दिया उठने का, और साथ में उसके बाद कह दिया मॉर्निंग प्रोग्राम करो। तो भगवत गीता, भागवतम श्रवण हो गया, पूरा युक्ति है। गुरु ही जोड़ते हैं भगवान से, तभी कहा है गुरु सेवे थे ठाकुर जाने। जिसने गुरु की सेवा की है वो ही भगवान तक जाता है, और कोई नहीं पहुंच सकता। और वैष्णव ही है जिसके ऊपर कह रहे हैं, कौन होते हैं वैष्णव? विष्णु जिस ऊपर सुप्रसन्न, द ग्रंथ साहब से, विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न है वही वैष्णव है, वही वैष्णव बन सकता है। और वैष्णव हृदय से बनना है। हम तिलक लगाकर वैष्णव का अटायर तो हमने ले लिया, कंठी माला, तिलक, दूर से वैष्णव लगते हैं, लोग देखते हैं, कहते हैं हाँ ये कृष्ण का भक्त है। पर हृदय कैसे स्वच्छ करेंगे? हृदय भी तो शुद्ध होना चाहिए। हृदय कैसे स्वच्छ होगा? तो उसका भी युक्ति कहाँ से आई? चेतो दर्पणम मार्जनम भवमादाव अग्नि निर्वापनम। चित्त का मार्जन करना है, चित्त की सफाई करनी है। तो गुरु नानक देव जी ने भी यही जपजी साहब, पहला ही जो अंग है ग्रंथ साहब में आया है, जप जी, जपना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, जप जी साहेब। तो उन्होंने उसी में कह दिया, मूत पलीती कपड़े दे साबुन लाइया तो भरिए मत पापा के संग दो पे नावे के रंग। जो मैला हृदय है उसको कैसे साफ करोगे? मैला शरीर तो साबुन से साफ कर लिया, मैले कपड़े साबुन से धो लिए, और मैला मन कहाँ से साफ कर लोगे? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हरि का नाम लेना होगा। जिसने नाम जपा है उसी का हृदय साफ होगा, उसी का हृदय शुद्ध होगा। और शुद्ध हृदय ही है जहां भगवान से हमारा आदान प्रदान होगा, नहीं तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो जप कौन करता है? जप करते करते हृदय शुद्ध होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि जितना नाम जपोगे हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। और वही बात गुरबाणी में गुरु नानक देव जी स्वयं कह रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हर हर जपंता कछ कहे न जमका। जिसने हरि का नाम जपा है उसे यमराज हाथ नहीं लगाएगा। जो हरि का नाम जप रहे हैं यमराज हाथ नहीं लगाने वाला। भागवतम उसको क्लैरिफाई कर देती है हमारे सामने कि हाँ, अजामल ने हरि का नाम जपा था, और अंतिम घड़ी में विष्णु और यमदूत दोनों आए, तो विष्णु दूतों को और यमदूतों को लौटना पड़ा और समय देना पड़ा दोनों को, और वो अपनी गलती रियलाइज कर गया। तो ऐसा ही है कि जो हरि का नाम जपते हैं यमदूत हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है ये। गुरबाणी इसी बात को ऊपर रखती है। यस, हर हर जपंत्या कछ कहे ना जमकाल, कोह नानक मंतन होई सुखिया अंतः मिले गोपाल। तो नानक कह रहे हैं जो नाम जपते हैं उनका मन सुखी हो जाता है, तन भी सुखी। मन शांत रहेगा, तन सुखी हो जाएगा। तो मन शांत कैसे करना है इसका भी युक्ति गुरु ने दे दी। जो हरि का नाम जपेगा उसका मन शांत होगा। जब मन शांत होता है तभी जीवन में हम बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। जिसका मन शांत नहीं है वो डिसीजंस नहीं ले सकता, वो कमजोर व्यक्ति है। जिसका मन शांत है वो ही बलवान है, क्योंकि वो कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में ही हैज गॉट द सेल्फ कंट्रोल। जिसका मन शांत नहीं है उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो रीजनिंग पावर उसकी लो है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उसके पास स्ट्रेस और एंजाइटी है, उसको विश्वास नहीं है अपने ऊपर। क्योंकि मन शांत होता है तो वी आर एबल टू टेक ऑल द डिसीजंस, द हेवी डिसीजंस इन आवर लाइफ, the right decisions in our life. Without a mind that is calm and composed, one cannot take the decisions that will make the life. क्योंकि उसका कंट्रोल किसके पास है? उसने अपने मन को कंट्रोल दिया। So Krishna says that in the Bhagavad Gita, जब अर्जुन पूछता है कृष्णा मना चंचला, मन तो चंचल है, वायु के वेग से भी ज्यादा तेज भाग रहा है। तो यही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिसना मन जिसका शांत कैसे होगा? जिसने हरि का नाम जपा है। जो हरि के साथ जुड़ जाता है उसका मन तन हुई सुखिया, तन भी सुखी होगा। ऐसा नहीं है जिसने हरि का नाम जपा है उसको इस संसार में सुख नहीं मिलेगा। कृष्णा से अनन्य समाम चिंतित ये जन परिपास थे। भगवान गीता में कह रहे हैं जो मेरा नाम जपता है, अनन्य भक्ति करता है, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो मैं लेकर आऊंगा, मैं खुद पहुंचाऊंगा जो उसके पास नहीं है। तो दिस इज डन। श्रीवास पंडित ने जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा
कि तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की इतनी कृपा रहेगी, तुम्हें कभी भी कमी नहीं होने वाली। तुम्हारे पास भोजन की कभी कमी नहीं होगी। उनसे पूछा, आप क्या करते हो? कहते हैं, मैं तो सिर्फ सारा रात दिन आपका नाम जपता हूँ। हम सारे भाई आपका नाम ही जपते हैं। तो उन्होंने कहा, खाते कहाँ से हो? कहते हैं, हम 3 दिन तक वेट करते हैं, अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर गंगा जी में कूद जाएंगे। पर वो 3 दिन पूरे होने से पहले ही हमारे सारे रसोई घर भर जाते हैं। हमारे पास इतना होता है, कभी कमी नहीं होता खाने का। सो दिस इज द गारंटी गिवन बाय कृष्णा। अनन्य समाम चिंतित हो, जो आपके पास नहीं है मैं लेकर आऊंगा, जो है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। सो दिस इज द फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। सो हर हर जपंत्या कछ कहे न जमकार, कहो नानक मन तन होय सुखिया। मन और तन दोनों सुखी होंगे, और अंत में बोनस है, गोपाल भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, सुपर बोनस मिल गया। सो व्हाई नॉट चैंट? जब हमारे को इतनी गारंटीज मिल रही है और फिर भी हम जप नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टकम में यही कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर, यू आर सो अनफॉर्चुनेट, तुम्हें वो रस ही नहीं आ रहा है नाम के अंदर, आकर्षण ही नहीं पैदा हो रहा नाम के प्रति। अभी भी तुम लोग उस नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति कह रहे, मैंने सारी शक्ति डाल दी भगवान ने इस नामों में, फिर भी मैं इतना भागा हूं कि मुझे नाम के प्रति आसक्ति नहीं हो रही। मुझे नाम जपने में क्या करते हैं, वी फील कि कैसे करें, बहुत हेवी है, कौन जपेगा 16 माला, इट्स टू हेवी। पर हम टाइम वेस्ट करते हैं टीवी देखने में, सीरियल्स देखने में, इधर उधर की गॉसिपिंग करने में, पॉलिटिक्स डिस्कस करने में, जिससे हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला। इट्स जस्ट शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। नाम नहीं जपते हैं। तो जिसने नाम जपा है वो ही इसका आनंद ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता। गुरबाणी कहती है, जैसे गूंगे को मिठाई खिला दो, वो नहीं बता सकता कितनी मीठी है। ऐसे ही नाम जपने वाला नहीं बता सकता ये नाम कितना मीठा है, ये नाम क्या दे रहा है उसको। नाम हमारे को वो देता है जो हमें, हम सोचे कि मार्केट से खरीद लाएंगे तब सुख मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। हम सोचते हैं हम कहीं घूमने चले जाएंगे हमें सुख मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता है। नाम वो सब दे देता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या है। तभी तो अंत में मिला गोपाल, नाम ही है जो भगवान दे देता है। भगवान की चीजें तो भगवान से सब मांग लेते हैं, भगवान को भगवान से कोई नहीं मांगता है। तो जो नाम जपते हैं वो भगवान को भगवान से मांग लेते हैं, तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। जब भगवान के सामने, हम सब दुर्योधन है एक्चुअली। हम चीजें मांगने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, बस मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी इच्छाओं की लिस्ट है मेरी, पूरी कर दो प्लीज भगवान। और हम दुर्योधन है। अर्जुन जब गया है भगवान के पास, भगवान ने बुलाया है, महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है कुरुक्षेत्र में, भगवान लेटे हैं, भगवान ने बुलाया है अर्जुन और धृतराष्ट्र को, और सॉरी दुर्योधन को। सो दुर्योधन आया है, भगवान के सर की ओर खड़ा हुआ है, अहंकार से भरा है, सर की ओर खड़ा हो रहा है। अर्जुन खड़ा हुआ है चरणों की ओर, सेवक है, ऋणी है भगवान का, भगवान से प्रेम है उसको। और भगवान ने दोनों के आगे क्या रखा है कि क्या देना है तुम्हें। एक तरफ ऑप्शन रखी है नारायणी सेना, सुसज्जित शस्त्रों से नारायणी सेना, और दूसरी ओर भगवान कहते हैं मैं निहत्था सारथी। और अर्जुन क्या, अर्जुन और दुर्योधन दोनों खड़े हैं। और कहीं आता है कि अर्जुन ने पहले मांगा, और कहीं आता है दुर्योधन ने पहले मांगा। सो यहाँ जो मैं बता रही हूँ उसमें दुर्योधन पहले मांग रहा है। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मैं दुर्योधन को अवसर देना चाहता हूँ, अर्जुन पहले मांगे, दुर्योधन पहले मांगे। तो दुर्योधन कहता है कि मैं एक निहत्था सारथी लेकर क्या करूंगा, मेरे पास तो लाखों सारथी हैं, मुझे एक निहत्था सारथी नहीं चाहिए। रथ हाँकने वाले सारथी बहुत है मेरे पास, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। और वो बड़ा प्रसन्न हो गया जब भगवान ने कहा तथास्तु। और नारायणी सेना लेकर वो सोच रहा है उसने इस युद्ध को अभी जीत लिया, वहां खड़े खड़े ही जीत लिया है। ये 5 पांडव निहत्थे 5 पांडव रह गए हैं, किसके साथ एक निहत्था सारथी है, थोड़े से शस्त्र है इनके पास, एक निहत्था सारथी है, और ये कहाँ जीतेंगे, मैं तो अभी ही जीत गया, वो ये सोच रहा है। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वो बाहर अहंकार से भरा बाहर चला गया। अर्जुन अभी भी बड़ा ही विचलित सा खड़ा है। थैंक यू माता, हरे कृष्ण। तो अर्जुन अभी भी बड़ा विचलित खड़ा है। अर्जुन सोच रहा है, बहुत ही सोच रहा है कि मैं भगवान का कैसे धन्यवाद करूं कि भगवान मेरे हिस्से में आए हैं। तो भगवान पूछते हैं अर्जुन से, तुम इतने विचलित क्यों हो, इतना सोच क्या रहे हो। तो अर्जुन कहता है मैं डर रहा था, दुर्योधन को अवसर तो दे दिया, पर सोच रहा था दुर्योधन अगर आपको मांग लेता तो हमारा क्या होता, हम क्या करते।
तो भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता तो वो मुझे मांगता। मैंने उसको बुद्धि ही नहीं दी। तो भगवान तो कह रहे हैं सर्वस्य चाम हिदि सन्निष्ट स्मर्थ, तो कह रहे हैं कि मेरे से बुद्धि आती है। ज्ञानम अपोहनम च विदे सर्वैरहं वेदो वेदांत कृत वेद वेदैव चाहम। तो भगवान कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं वास कर रहा हूँ परमात्मा के रूप में। मैं सब जानता हूँ किसके हृदय में क्या चल रहा है। कोई मुझसे कुछ नहीं छिपा सकता। लाख कोशिश कर ले वो नहीं छिपा सकता मुझसे। मैं सब जानता हूँ। तो जो हृदय से शुद्ध है, जो मेरी तरफ आना चाहता है, मैं जानता हूँ उसको। उसके लिए मैं सारे रास्ते खोल देता हूँ। मैं वो एक कदम चलता है, मैं करोड़ों कदम आगे आ जाता हूँ। और जो मुझसे दूर जाना चाहता है, जो दुर्योधन जैसा है, वो एक कदम पीछे है मेरे से, मैं करोड़ों कदम पीछे हूँ उससे। वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं उसके हृदय में वो बुद्धि ही नहीं देता मुझ तक आए। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा देते, मुझ तक न आने की बुद्धि भी मैं ही दे रहा हूँ। पर किसको देता हूँ ये मेरे ऊपर है। ये डिस्क्रिशन मेरे पास है, मैं किसको दूंगा। सो दिस इज व्हाट द गुरबाणी इवन सेज, द ग्रंथ साहिब एक्चुअली सेज दिस, कि गुरु की कृपा से भक्त जो है उसके अंदर इतना प्रेम आता है भगवान से कि वो आगे की जो जर्नी है सरलता से पूरी कर लेता है। क्योंकि अंतिम घड़ी ही डिसाइड करेगी हम कहाँ जाएंगे। यम यम वापी स्मंडम। आई एम जस्ट गिविंग अ जिस्ट ऑफ द भगवद गीता विद दैट, विद द ग्रंथ साहिब। सो आई एम जस्ट क्विकली चेंजिंग द टॉपिक्स। सो इट इज कि वो कहते हैं कि यम यम वापी स्मरणम, हम सब जानते हैं, गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं जो अंतिम घड़ी में मुझे याद करेगा मेरे धाम आएगा। अजामिल की कथा से ये प्रूव हो गया कि हाँ, भगवान का नाम लेने पर ही भगवत धाम मिलता है, नहीं तो यमदूत आ जाते हैं लेने। जिसने भगवान का नाम लिया, अजामिल ने गलती से नारायण कहा है, उसको पूर्व जन्मों का कुछ तो फल था उसके पास कि उसके बेटे का नाम नारायण रखा गया। वो भगवान की ही कृपा थी कि उसने नारायण नाम रखा गया उसका। नहीं तो वो कैसे रख सकता था, कोई आकर उसके घर में नारायण नाम रख देता। इतना कुकर्मी था वो, इतने गलत कार्य कर रहा था। उसका बच्चों का नाम, उसके बेटे का नाम नारायण कैसे होता। ये तो भगवान की उस पर असीम कृपा थी कि उसके बच्चे का नाम नारायण हो गया। और फिर यमदूत आए, विष्णु दूत आए, दोनों का संवाद हुआ और अजामिल को अकल आ गई, समझ आ गई उसकी गलती कहाँ थी। तो भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता। जिसने मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति की है उसको मैं बेसहारा नहीं छोड़ता हूँ, उसको मैं लेकर जाता हूँ भगवत धाम। तो अवसर मिला अजामिल को। तो इसीलिए कहा है, गुरबाणी कहती है कि अंतकाल जो सिमरे लक्ष्मी ऐसी चिंता में जो मरे, गोविंद नाम न बिसरे मेरी बाई। कहते हैं कि गोविंद का नाम कभी मत बिसारना। और अंत काल में जिसने जो सिमरता रह गया लक्ष्मी, धन के चक्कर में रह गया, धन ही कमाता रह गया, धन में ही उलझा रह गया, हिसाब किताब में ही उलझा रह गया, भगवान का नाम नहीं था जीवा पर, सर्प योनि वलवल उतरे, सांप की योनि में जाएगा। अगली योनि सांप की तैयार खड़ी है उसके लिए। क्योंकि वो धन चाहता था तो खजानों में सांप रहते हैं और खजाने में ही वो जन्म ले लेगा, सांप बन जाएगा। अंत काल जो सिमरे घर मंदिर, जो घर को सिमरता है, अंतिम घड़ी में उसका ध्यान रह जाता है, मेरे पास एक है, दो होने चाहिए थे, मेरे को ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, पर नाम नहीं सिमरता, भगवान का नाम नहीं लेता, उसको प्रेत योनि बलबल उतरे। कहते हैं वो हॉन्टेड हाउसेस जो है ईंटों में, भगवान कहते हैं तुझे ईंटें बड़ी प्यारी थी, मैं ईंटों में तुझे वास देता हूँ। क्योंकि भगवान बड़े कंपैशनेट है। हम कहते हैं बड़े दयालु हैं, दया के सागर है। तो वो दया करते हैं, हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। तभी उन्होंने कहा कि मैं सारी तुम्हारी ही इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। अंतकाल जो सिमरे, इतना कहा गया, अंतकाल जो सिमरे संतान ऐसी चिंता में जो मरे। जो संतान में ही आसक्ति लगा के बैठा रहा कि मेरे ये बच्चा, वो बच्चा, इसका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, उसका ध्यान अपनी संतान में ही उलझा है और शरीर त्याग दिया। सुकर योनि वलवल उतरे, सुअर की योनि तैयार खड़ी है उसके लिए। भगवान कहते हैं तुम्हें एक दो बच्चे चाहिए थे संसार में, मैं तुम्हें दर्जनों बच्चे देता हूँ, तुम्हारे साथ रहेंगे वो। सुअर एक है जिसके पीछे दर्जन बच्चे चलते हैं। तो द गुरबाणी सेज दिस कि अंतकाल जो सिमरे स्त्री, स्त्री का ध्यान पुरुष में है, पुरुष का ध्यान स्त्री में है, पति पत्नी का ध्यान एक दूसरे में रह गया और अंतिम घड़ी आ गई है। दोनों एक दूसरे की शक्ति नहीं बने, एक दूसरे का आकर्षण बन गए। तो अंतिम घड़ी आ गई है, तो अब क्या होगा। कह रहे हैं कि बहुत ही कठिन होता है कई बार कई चीजें सुनना, पर हैवी है। भगवान कह रहे हैं ये सत्य है। वैश्या योनि वलवल उतरे, वैश्या की योनि, प्रोस्टिट्यूट की योनि तैयार खड़ी है। इतना गहरा है कि आकर्षण नहीं रहना, किसी भी चीज में आकर्षण नहीं रहना चाहिए, भगवान ये चाहते हैं।
अंतकाल जो सिमरे नारायण, ऐसी चिंता में जो मरे बदत्त लोचन, पीताम्बर ताके हृदय बसे। जो नारायण सिमरते हैं, पीताम्बर उनके हृदय में वास करते हैं, उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। जो अंतिम घड़ी का जो निर्णय है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पर वो किस पे निर्भर करता है? पूरे जीवन पर। सिर्फ हम ये सोचे अंतिम घड़ी में मैं भगवान को ब्लफ कर लूंगा, अभी तो मैं जो मर्जी कर लूं, अंतिम घड़ी आएगी तो मैं नाम ले लूंगा, वो नाम नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अंतिम घड़ी कैसे आएगी, किस समय आएगी, कब होगा, कोई नहीं जानता। भगवान ने ये चीज अपने पास रखी है कि कोई भी नहीं बता सकता अंतिम घड़ी उसकी कब आएगी। तो इसलिए भगवान क्या चाहते हैं हमसे कि हम हर समय उनका नाम लें, क्योंकि अंतिम घड़ी कैन बी एनी टाइम, एनी मोमेंट। हम कभी भी इस संसार को त्याग सकते हैं। कोई नोटिस नहीं आएगा, देयर विल बी नो नोटिस, नो शॉर्ट नोटिस, नो लॉन्ग नोटिस। बीमारी आ सकती है, बुढ़ापा आएगा, पर कब जाना है वो घड़ी नहीं आ सकती, वो हमें पता नहीं है। तो हम नींद में जाएं, जागते जाएं, बीमारी से जाएं, चलते जाएं, बैठे जाएं, कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए हर समय ही चेतना में भगवान हो। तो हर समय कैसे रहेंगे चेतना में भगवान? हर समय भगवान चेतना में रहते हैं। जब हम दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे, 10% भगवान को देंगे, 2 घंटे 40 मिनट बनता है, बट इफ वी गिव एटलीस्ट 2 आवर्स, देन दैट 22 घंटे भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। सिर्फ 2 घंटे मुझे दो, 22 घंटे मेरी गारंटी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा अपने आप को। तुम मुझे हमेशा याद रख सकोगे, वो मेरी कृपा हो जाएगी तुम पर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, अ मैसेज फॉर अस, कि हमें भगवान के साथ जुड़ना है तो हमें 2 घंटे एटलीस्ट दिन में भगवान को देने हैं, और सिंसियरली देने हैं। तभी अटेंटिव चैंटिंग के ऊपर फोर्स डाला गया। Attentive chanting means where the chanting is actually done, where it is in the mood, method, and mellow. 3 M's I always say for chanting. The mood for chanting. We should have the mood for chanting कि मुझे जब शुरू करना है, सुबह हम उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, उसके बाद जब शुरू करते हैं तो हमारा मूड होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, कि मुझे भगवान के प्रति आकर्षण हो, प्रेम आए। So that is the real mood for chanting. Then the exact method of chanting. So method of chanting is that we actually chant in congregational chanting, that is. भक्तों के संग में जप करें, और जप करें जो हमें सुनाई दे। मम्बल नहीं करना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कानों से हमारे हृदय में जाए। हम भोजन बनाते हैं किचन में, और भोजन पकता है रसोई में, खाते हैं हम मुंह से, और जब जैसे ही पेट में पचता है पूरा शरीर जो है उसमें एनर्जी आ जाती है। पर ऐसे ही भगवान का नाम है वो जीवा पर पकता है। भगवान का नाम हम जीवा पर लेते हैं और कानों से खाते हैं। हम जब गाते हैं या बोलते हैं भगवान का नाम जप करते हैं तो इट शुड बी वेरी ऑडिबल, ऑडिबल टू द ईयर्स। कानों तक सुनाई देना चाहिए एक एक शब्द क्लियरली। और वो कहाँ पे पचेगा? हृदय में पचेगा। वो हृदय में जाकर डाइजेस्ट होगा, और जब हृदय में डाइजेस्ट होगा तब जाकर हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पणम मार्जन होगा, हृदय की सफाई होगी। सफाई किससे करनी है? सफाई का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये सारे अनर्थ हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। इनसे बचना है हमें। तो ये कैसे इनसे छुटकारा होगा? सिर्फ हरि के नाम से। So the real method is listening to your chanting. Those who don't listen to the chanting, that is not attentive chanting. Attentive chanting means listening to your own chanting. And then comes the mellow. Mellow is कि आपके पास कोई अपने लिए, अपने जपा में कोई लय हो, जहां पर आपका जपा इतना इंटरेस्टिंग हो जाए कि you feel it's so interesting with you. Like often I do like it's Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare. So there is a flow in it. लय, आप उसी लय में engross हो जाते हो. You just don't want to leave chanting. फिर मन करता है ये chanting चलती रहे, खत्म नहीं हो. So this is the method, mellow, and the mood. So 3 M's, they help us to do the right chanting. तो जपा है जो हमें भगवान से मिलाएगा, और कोई रास्ता नहीं। The Gurbani says that. भगवान ने भी कह दिया गीता में, जपा यज्ञ अस्मि, जपा यज्ञ मैं स्वयं हूँ। फिर भगवान ने कहा, गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि जप करना पड़ेगा, बिना जप के किसी की गति नहीं होगी। और गुरबानी कहती है, द फर्स्ट लाइन्स ऑफ गुरबानी ग्रंथ साहिब आर दीस,
एक ओंकार सतनाम, और जो भी वैदिक मंत्र हैं सारे ओम से शुरू होते हैं। Even the Gurbaani starts with Om. एक ओंकार सतनाम, करता पुरुष निरपाव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। तो उन्होंने कहा कि पहले जो सारी पंक्तियां हैं ये भगवान को ग्लोरीफाई करती हैं। एक ओंकार, एक वही है, एब्सोल्यूट ट्रूथ ही इज। फिर उसके बाद कर्ता पुरुष, ही इज द कर्ता पुरुष, करने वाले वही है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निरपाव, ही इज निर्भाव। सारी fears, he's fearless, he's above fears, all the fears. Nirpav, nirvair, above all animosity. किसी से द्वेष नहीं करना, he's above, वो कहते हैं भगवान गीता में, मैं, मेरे लिए सब समान है, मैं कुछ भी, सब मेरे लिए बराबर है। आई एम नॉट पार्शियल टू एनीबडी, सिर्फ मेरे भक्त जो है वो मुझे जानते हैं, मैं, बाकी मेरे लिए सब एक जैसे हैं, एक समान है। सो ही इज अबव एनिमोसिटी। एंड देन निर्वैर, अकाल मूर्त, ही इज अकाल, ही इज अबव द काल, काल कैन नॉट टच हिम, ही इज नॉट मटेरियल। अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, ही इज आउट ऑफ ऑल द स्पीशीज, सारी योनियों से ऊपर है वो। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, ये कैसे मिलेंगे आपको? गुरु की कृपा से मिलेंगे। ये भगवान मिलेंगे कैसे? गुर प्रसाद, गुरु देंगे, कृपा करेंगे। प्रसाद मीन्स कृपा। सो गुरु की कृपा से भगवान मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? जप। दो लाइनें इधर, दो लाइन उधर, बीच में लिखा गया जप। उसको बंद कर दिया गया कि और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ जप। सिर्फ जप करने से ही मिलेंगे, और कोई रास्ता है ही नहीं। देयर इज नो वे आउट। कोई सोचे कि मैं बहुत अच्छी पूजा कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छे मंत्र बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा ये काम कर लेता हूँ, वो नियम कर लेता हूँ, उससे नहीं मिलेंगे। केवल एक ही रास्ता है, जप करने से मिलेंगे, और किसी चीज से नहीं मिलेंगे। तो हमें जप के ऊपर पूरा जोर दिया गया कि जप करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो गुरबाणी से कमल नयन मधुर बैन कोट संग सैन शोभ, माँ यशोद जिसे कहत है दही बात खाई जियो, आद सच श्रीनिवास आदि पुरुष सदा तू ही वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो कौन है वाहिगुरु? कमल नयन मधुर बैन, जिनका जो नयन है कमल नयन, लोटस लाइक आईज है उनकी। कमल नयन मधुर बैन, मीठी मुस्कान है उनकी। मधुर बैन कोट संग सैन शोभ, करोड़ों में वही शोभते हैं। एक करोड़ों करोड़ों में एक भगवान ही है, सबसे सुंदर वही है। कोट संग सैन शोभ, माँ यशोद जिसे कहते हैं दही भात खाई जियो। माँ यशोदा जिनके पीछे भागती हैं दही भात लेकर। आद सच श्रीनिवास आदि पुरुष, ही इज द आदि सत्य, आद सच श्रीनिवास, श्री जिनके चरण कमलों में हमेशा निवास करती हैं, उनके चरण पखारती हैं। कौन? लक्ष्मी। श्रीनिवास आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इज द आदि पुरुष। गो कह रहे हैं श्रीनिवास आदि पुरुष। और कौन है? सदा तू ही वाहिगुरु 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 जी, आप ही वाहिगुरु है, वाहिगुरु है, वाहिगुरु है। सो वाहिगुरु 4 लेटर से बना है। वह ग र, वह इस सतयुग सतयुग में सतगुरु वासुदेव बब्बा विष्णु नाम जपावे। त्रेता युग राम जी रर्रा राम जपे सुख पावे, त्रेता में राम आए। कहा गया है सतयुग में भगवान को पाना था तो विष्णु के ऊपर मेडिटेट करना था, बब्बा विष्णु सतयुग। त्रेता युग राम जी रर्रा राम जपे सुख पावे। फिर दैट केम दी द्वापर युग, गग्गा। द्वापर युग में कहा गया हरि आए, हरि इज कृष्णा। देन केम दी कलयुग, कलयुग में गुरु नानक आए, गुरु के रूप में आए, और सबको क्या कहा? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सो चारों अक्षर, वह विष्णु ह हरि गोविंद राम, चारों अक्षर एक कर एक जप मंत्र बनाया वाहिगुरु। सो ये चारों युगों के 4 लिए गए और एक मंत्र बन गया वाहिगुरु। सो विष्णु हरि गोविंद राम। So I've given this with full evidence in my book, in Vaishnav Teachings in Sikhism, the book that my Guru Maharaj asked me to write long time back. I wrote it in 2007. And when I wrote this book in 2007 on the orders of my Guru Maharaj, then this book was taken to all over the world by Jayapataka Maharaj. He carried it. He was the first one to carry it all over the world. He took it to Hong Kong. He met me in London also, and he told everybody, picked it up in the Rath Yatra and said, everybody must read this. It's a wonderful book for preaching. He gave a very beautiful review for this. He said, thank you for this wonderful contribution. I pray you can make many pure devotees.
And Jai Advait Maharaj also gave the beautiful review on this. He said the book demonstrates very well sorts of parallels to be found between the Guru Granth Sahib and the Vaishnav text. This should prove valuable for devotees. You have rendered a good service. The book is also designed nicely. So this was given by them, the reviews. तो कहने का भाव है कि जो ये book है, this was written on the request of Guru Maharaj, or orders of Guru Maharaj, not request, I would say. And he is the only one who got me right. मुझे तो लिखना नहीं आता था. I'm not an author. I'm not a writer. I have yet on my Facebook also till date I have my class teachers from my school. वो मेरे Facebook पर है मेरे साथ. उन्होंने कभी स्कूल में मुझे ऐसे नहीं देखा है कि मैंने कुछ लिखा हो. कभी नहीं जानती है वो. they are there. वो खुद ही astonished है. उन्होंने मुझे comment दिया जब मेरे को याद है. मैं काफी सारे इंटरव्यूज देती हूँ कनाडा में जब होती हूँ तो रेडियो एंड टीवी इंटरव्यूज मैक्सिमम आई गिव इन कनाडा वैंकूवर में. So once I was giving an interview and that's on the YouTube and she heard it live. I was while giving, so it was coming live on the net pe. So she gave a comment immediately. She said, "You have surpassed your teachers." That was the biggest comment and compliment for me that coming from my teacher, class teacher. So I could not imagine that she could write that. She said, she's Punjabi herself. She's a Sadani. And she said, "You have surpassed your teachers." I'm from a convent school. So it was amazing to get such, and it's all the blessings of Vaishnava blessings. It's all blessings of Guru Maharaj and other sannyasis, all the Vaishnavas, because I know I have no capability of myself. I cannot write anything like this. And जब मैंने लिखा भी, it was in 1 month I wrote this, and nobody can, I think so, no person can write in 1 month, including me. कोई नहीं लिख सकता. अभी I'm writing another book and I'm struggling. I don't get time to finish it. मैं हर महीने सोचती हूँ इस महीने खत्म करना है उसको. Before I have to finish it up before June. It's a deadline. तो मुझे अभी तक I am not able to. For the last 6 months I'm writing. But it's only the mercy of the Guru one can do it. So any question anybody has, they can ask. कुछ पूछना चाहते हैं कोई? Anybody wants to ask? Yes, Prabhu. So in this book that you've written, all these quotes from Guru Granth Sahib, Yeah. and parallel. I mean, Yeah, from the Gita and the Bhagavatam also. everything is there. Yes, everything and much more. What I've said. Amazing. More things are there. Yes, Prabhuji. Yeah, we have few copies, very few, 4-5 copies I have. She can let you know. So this book is in Sindhi and Urdu in Pakistan also. We can read it. Yeah. English. No, we have English and Hindi, but I'm just telling that there are devotees in Pakistan, so they wanted to make it translate into Urdu and Sindhi. It's available there as well. I was. One Sindhi and one Urdu. I want to give it to my community. अच्छा वो तो फिर पाकिस्तान तो मंगानी पड़ेगी. I'll have to ask somebody from the Pakistan to send it. It is possible. Yes. And also Sindhi. I'll tell them. जब भी devotees आएंगे, I'll tell them to get it. Then definitely. I'll take out some printouts. Then you can do that. So it is. Any other question anybody has? Anybody wants to ask something? Sim kuch puchna hai? Mataji, you would like to ask something, please? She's from the Sikh family. I understand. So Love. how to love Krishna? Yes. And I think वो love करना आ जाए तो उससे ऊपर तो कुछ That's right. That's what we every day pray. Krishna Prem. What we want. That is the love of God. So love comes when we come to the association of devotees, then only you will find love for Krishna. Because Bhagavan कहते हैं that is the birthplace. Bhakti की birthplace है association of devotees. And Bhakti is Premai Seva. The service in itself is the love for God. When we serve the Supreme Lord, and सबसे बड़ा serve क्या है? I would like to tell you the best serving. How we can serve Krishna is the first is chanting, of course. जब खुद ही करना है, भोग लगाकर खाना, and the foremost is preaching. When we practice ourselves and give it to others. Practice means जब आप खुद जप करते हो, खुद भोग लगाकर खाते हो प्रसाद, और फिर दूसरों को भी ये ज्ञान देते हो, then you become the most dear. Then the Krishna's love comes to you. Because the Gurbani also says that. Guru Nanak Dev Ji कहते हैं, जन नानक मंगे तूड़ उस गुरसिक की जो आप जपे अवरो नाम जपावे.
He says, I take, Guru Nanak Dev Ji कहते हैं, I take the dust of उस गुरु के शिष्य की चरण धूलि में माथे पे लगाता हूँ, जो खुद भी नाम जपता है और औरों से जपवाता है, दृढ़ता से खुद जपता है और दूसरों से भी जपवाता है. And Krishna says in the Bhagavad Gita, जो मुझे सबसे dear है कौन है? He says in the 18th chapter, the most dear to me is one who preaches my glories to others, who practices and preaches. So this is the way to become favorite of Krishna. This is how you become favorite. So Krishna Prem ऐसे ही होता है. So I request you to chant the Mahamantra and eat prasadam and do chanting. Prasadam is the only way. The Gurbani says कि जो ये सब देवता है, अन्न देवता, लूंड देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता है, इन सब का ऋण है हमारे ऊपर. तो ये ऋण कब उतरता है? जब भोग तैयार होता है और जब वो अगर राम का नाम लेकर ना खाया जाए. तो कहते हैं जिन राम नाम ना लेता तिन मुख तुक्का पैया. जिन्होंने राम नाम लेकर नहीं ये सब भोजन को पाया, उन्होंने सिर्फ थूके ही डाली अपने मुंह में. So Krishna says, Patram Pushpam Phalam Toyam Yo Me Bhaktya Prayachati. So he's asking for the food. He says, offer to me and then eat. And then what happens? You get the Krishna's love. You get the Krishna Prema. Hari Bol. Thank Mataji, you. can you just tell us that, how did your spiritual journey start? Yeah. And We want to and how did you come in contact with your Guru Maharaj? My Guru Maharaj. प्रभु जी ये तो बहुत सारे लोग बहुत बार सुन चुके हैं. हम नहीं सुने. आप नहीं सुने. My journey started in 98 December, 22nd December 98. I wrote an article also in BTG. It came there, it was published. My Guru Maharaj always said, I want you to write articles. And I wrote one day, I just sat down and I wrote about myself, how I came to Krishna consciousness. And I sent to the international BTG. And Guru Maharaj said, you may send it there, but no influence works there. He said, he rightly said. He said, whenever you send an article, don't come to me. They have to pass it, and if it's printed, it's yours. So, but I just attempted it. He said, I knew that I'm not so good in English, but I just wrote it. And he told me that the standard is very high when you write. But then I did not think of the standard or something, but I just wrote what I had in my heart. And I just sent it, and in one go only I got the mail in the evening, your article is selected. Oh, I was so shocked. And then it came out in the BTG, and I was still very apprehensive. I did not tell Guru Maharaj that it's coming in BTG. And I said, let the copy be in my hand, and then I'll show it to him. Yes, it's here. First, I should see myself, it's printed. And then it was so happened that there was a meeting going on. Kartik, it was the month of Kartik ka mahina tha, और Vrindavan में meeting चल रही थी, GBC meeting. So there was a GBC meeting going on, and I was down there is जब वहाँ पर shops लगती हैं, stalls लगते हैं. I was sitting in one of the stall with my Prabhuji. We were just buying something, some paraphernalia. So we saw Guru Maharaj coming towards me, walking. So Guru Maharaj just walked, and he said, oh, Radhika Kripa, your article is in the BTG. I said, yes, Guru Maharaj. Then he showed me. I had not seen it as yet. So what happened was the meeting was going on, and the BTG had been printed. It had come that day itself, and it was given to all the participants in the meeting. And Guru Maharaj Pasa, he was flipping papers, and there was a big photo of mine with how I came to, and he was like astonished, and he came downstairs in the middle of the meeting, and he says, your article is here. So this is all his love and mercy. But then in 98 is actually 98 December, 22nd December 98, I lost my father. He was 64 only. And it was very sudden. His death was very, very sudden. Like just within a week, he was gone. And that was the biggest shock to my life. And when his body was brought home, I remember the day when his body was lying. And what thing first came to my mind was, what happens? Why are we born? We are not born for this only. But I will tell you prior to that, chanting kaise hame shuddh karti hai, I have experienced it myself from that journey. Because when he was in the hospital, it was like 10 o'clock in the night. In the evening, late evening, they had taken him to ICU. I was there. And the last thing he said when he was being put on the stretcher to go to the ICU, he was suffering from a heart attack at that time. That was the heart attack going on. And he said one thing, why Guru, he said that. And he told me, not anybody else in the family, he just told me, now go take rest. Aram karo, why Guru, why.
and he was taken to ICU. So, and then doctors in the middle of the night they called us back and they said he's going. So I went in the room and then I came out. He was on ventilator. I came out. I sat down. I took a corner in the hospital. I remember, and because in from my childhood, मैंने घर में सिर्फ वाहिगुरु ही सुना था कि ये जपना चाहिए. And my mother, she used to get up every day in the morning at 3:30. Every day, she was pure vegetarian. She used to get up at 3:30 in the morning for her. We used to laugh at her. Why do you get up? There is no work at 3:30. But she had that habit. She used to get up 3:30. We had a room in our home that we used to call Babaji da Kamra. That was the first room in our house. We had a big palatial house. My father was a big businessman and export house owners and all. And a lot of, I was the most pampered child in the house, the third daughter, and very pampered. So sub wishes, he used to fulfill all my wishes, even going abroad like for holidays in 1970s. I'm talking about 1979. I had got. I'm just telling you that how loving he was, how caring and loving. I had just secured like first division. At that time, first division was a big thing. Like, abhi to 90% is big thing, but then the 70% was big thing. So he had promised me whatever you will ask, I'll give you if you get 70%. It was my 10th boards, I remember, and I said I got on dot 70%. He said, "What do you?" I said, "Now you promised me. I want a trip to Europe." And imagine this Saturday, I got the result. Next Sunday, we were in London, and we were on set for the Europe trip. So this is how he actually brought me up, giving all what I wanted in life. So now he was going, and I could not let him go like that. But I had just learned from my mother that we should chant because she used to do it, and she actually had given us a training before going to school. I used to do Japji Sahib. Before going to bed in the night, I used to do Ras Sahib. I used to do the part. So, but not knowing exactly, I had just the parrot reading. Just I used to finish it up, and but that was my routine. I was in school like seventh, eighth class, sixth class. But then I took a corner in the hospital and I sat down and I started chanting Vaheguru. And I remember for 3 hours I was chanting. I did not speak to anybody in the hospital, not to my sisters, nobody. They were all very sad. But I just took a corner. I was expecting some miracle. I was praying. I was chanting, please, some miracle may happen. But then the doctor said, like 3:30 in the morning, they said he's gone. So the first thing is I ran outside in the open area and I looked up towards Lord and I said, okay, I accept it. He's gone. But I don't know what happened to me, and I was not a vegetarian at that time. Let me tell you. And that time it was I promised to myself from this day onwards I'm not eating anything non-vegetarian. I don't know how that came. I don't know how it was connected to that. But Krishna chanting purifies your heart. So that he did first thing. He made me vegetarian. And my husband was surprised after that because he knew I was a very hardcore non-vegetarian. And then I left this, and then we were at home. The body came home. So then at that time, I asked my sister. I questioned her. I said, "Why this happens? Today he's gone. We are crying. Tomorrow I'll be lying here. My children will cry." And then they will go, their children will cry. What is this chain? Krishna is, I didn't know Krishna at that time. I said, God is making a fool of us. We are actually fools. We are simply fools. We are actually puppets in his hand and he's making us cry all the time. Its separation is bound. Today my children are small, they will grow up and I will be lying like this. Because I remember that day where his body was there, we used to often laugh with him. No? With my father, I had a very, very relationship it was not a father and a daughter relation. It was like friends. Just I would speak up everything with him. And he used to laugh and I used to say, and he always wanted the drawing room to be like that, this. And then I said, nahi, nahi, Papa, aise nahi karna. Then he used to say, why jab jayenge to, usually we bring the body in the drawing room. So he said, drawing room spoil ho jayega na, jab body aayegi, jab nilayenge usko. So I remembered all that what he had said. So it was coming to me that one day I will also be like that and my children will cry. So why do you want to cry? There is something must be there to break this chain. We should do something. And I wanted to know who God is. I had heard, and I knew Guru Nanak Dev Ji has never said I am God. Then who is God? Brahma Jigyasa. Huh? Brahma Jigyasa. Yeah, I didn't get you. What did you say? Brahma Jigyasa.
Yeah, that's the Brahm Jigyasa. I came to know all these terms later on because I didn't know, but they were coming to me automatically. So मेरे को यही लगा कि भगवान कौन है? हम सब कहते हैं भगवान एक है और फिर I'm a Sikh married into a Hindu Punjabi family. So it was for me कि मैं कहाँ से ढूंढूं भगवान कौन है? तो मेरे मेरे घर में I had the Granth Sahib, a small Granth Sahib I have. I opened that. I wanted the answers, but I could not understand a word of it. Now I'm speaking so fluently. I could not understand what I'm reading there. Then my Prabhuji is a Hindu family, but they didn't have any Gita at home. So I went outside. I bought so many books like they talk about soul, this, that, but I could not understand a word. Then I thought my mom used to say that we should go early in the morning to the temple or gurdwara early in the morning. So I went to some temples, some gurdwaras early in the morning to find some peace. At least I might get somebody to tell me some peace I might, but nothing happened. In fact, the other temples other than ISKCON where I went, they would ask me, I said, what time do you do the aarti and all? He said, what time aap kab aa sakte ho? I said, you don't have to ask me, main kab aa sakti hu. You should tell me when you do it. So I said, this fails then. Because when they ask this fails. So then I was wondering what to do. So then in the meantime, somebody said, though I'm taking a bit long to tell you the story. It's very interesting. Yeah. Then somebody told us that there is a, you go to the Siddh Mandir of Hanumanji in Salasar near Jaipur. So they say if you go there, if you tie the bell, there is some bell, some thread you tie, not the bell, the thread. You tie there, Nadial and thread. And whatever you ask, that is answered. So I told my husband, let's go there. So, and one thing is he supported me. He never said that you're mad, what are you doing? He supported me for this thing because the whole day I was wondering. I'm a fashion designer and I had a business also at that time. And I was not paying any heed to my business and I was listening all day throughout the day, the Gurbani Kirtan. I could not listen to any film song in my house. I could not watch TV, sit with children, never. I could not do that. That was out of question for me. And then I went to Salazar. He took me. I went to Salazar. I tied the thread and the nariyal, and I asked Hanumanji, "You please let me know who God is. I want to know who God is." तो उसके बाद में मानोगे नहीं, within 2 months, 15th May 1909, I was in Vrindavan with my Prabhuji. First time in my life. We reached Vrindavan. There also we had gone to meet some astrologer because उस astrologer से भी मुझे यही पूछना था कि can you tell what happens after death? What happens? And you won't believe it. I wanted to try any tantric also for that. मैं किसी को नहीं छोड़ रही थी. वो तांत्रिक भी एक मैं जानती थी, वो प्रभु जी का कभी बार्बर था. He had become a black magician. उसके नाम क्या है? And I called him up. He was a Muslim, Hashim bhai. I said, Hashim bhai, मुझे पता करना है. I want to see where my father is. So he understood what I'm saying, but he knew my husband since my husband's childhood. So he wanted I should not go in this path at all. He called up my husband. He did not tell me. He said, "Ha ha, I'll let you know. मैं आपको बुलाऊंगा." But he called my husband. He said, "Don't let her go to any tantric or anybody, including me also. She should not go anywhere on this path. This is not the right path. हम जो करते हैं वो गलत करते हैं, हमें पता." He said that. And then my husband said, don't ever think of that. I said, fine. So then he took me to Hanumanji. And then we came back, and within 2 months, we were in Vrindavan. We had gone to see an astrologer. I asked my husband, take me to that astrologer. I had heard about him through somebody. And when we reached, that astrologer was not at home. He lived near somewhere in Mathura village there. But वो घर पे ही नहीं मिला. जब घर पे नहीं मिला तो हमने फिर ड्राइवर को बोला तो हमें कहीं और चलते हैं. तो ये मैंने कहा रश वाले एरिया में नहीं जाना. तो बांके बिहारी से बहुत क्राउडेड होता है. ऐसे नो, वहां नहीं जाना है, कैंसिल. तो ये साइड अच्छा, लेट्स गो टू अंग्रेजों का मंदिर है. ही सेड वो बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, वहां मैं कहा यस, आई वुड लाइक टू गो देयर. तो वो हमें वहां ले गया. वी एंटर द टेम्पल. मालूम नहीं है जैसे कहाँ गया स्क्रिप्चर्स में, देयर इज द गुरु, मार्ग प्रदर्शक गुरु होता है, कोई रास्ता दिखाता है. अ डिवोटी जस्ट केम अप टू अस. And nowadays that devotee is nowhere in the picture. We don't see him anymore in the temple. He came over, he said, आप पहली बार आए हैं ऐसे ऐसे? And we said yes. And he said, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ.
he took us, the whole family, to Prabhupada Samadhi. And Prabhupada को प्रणाम किया. और आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को कहता है चलो आज ऊपर चलो, आप आपको ऊपर परिक्रमा कराते हैं समाधि की, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर. तो उसने हमें बोला कि अच्छा आप आइए ऊपर चलते हैं. हम ऊपर चल गए. ऊपर देयर इज लोटस फ्लावर्स प्रभुपाद की समाधि पर, जहाँ पे वो आपको पेपर पे हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ देते हैं और कहते हैं कि आप एक एक फूल के ऊपर एक एक बारी मंत्र बोलो, and 108 times you complete your first round. So I was so desperate. I said, yes, I will do it. We all did it. He gave it. I walked very sincerely on each flower and I chanted. I completed my first round on 15th May 99 there at Prabhupada Samadhi. And then he took us to the deities. He said Gaurnitai, that I didn't understand who they are. Then he showed Krishna Balaram. वो भी नहीं समझ आया वो बलराम जी is, it's okay. And then Radha Krishna understood, yes, these we know. And Radha Krishna darshan kiya. He took us to Prabhupada quarters. So Prabhupada के quarters में हम गए तो वहाँ पे he told Prabhupada ने यहाँ शरीर छोड़ा, उन्होंने ISKCON बनाया था. Then जहाँ Prabhupada writing कर रहे हैं desk में बैठे हुए, so when he was telling me, I could feel the answers as coming to me. What I was looking for, I'm getting the answers. They're right here. They're right here. So Prabhupada is giving the answers to all I was looking. कि भगवान कौन है, हम क्यों आते हैं, हम क्या कर रहे हैं. And then I asked him, can I have this tilak what you're putting? और उस devotee की जेब में तिलक भी था. He took out the tilak. प्रभुपाद के उस पॉन्ड से जहाँ वो मॉर्निंग में बैठ के जपा करते थे, उस पॉन्ड में से पानी लेके he rubbed it, he put the tilak on my forehead. And then he took us out and he told Prabhuji that it was 10 o'clock in the morning and very, very hot. So he said कि आपको शाम की आरती अटेंड करना चाहिए. It is out of this world. I got आरती. I asked my Prabhuji, he said, okay, we will wait. We will stay the whole day. I said, okay. और पर मंदिर बंद हो गया, बहुत गर्मी थी, कहाँ बैठे, कभी गाड़ी में कभी फर्श पर. Anyway, 4 बजे मंदिर के अंदर दर्शन खुल गए. We went inside, we sat with the devotees, we did kirtan with them, we listened, we learnt a bit and we were clapping and doing it. बच्चे भी थे. The evening आरती हुआ. We attended the आरती before Radha Krishna. And everybody got the garlands. They throw the garlands. These days they don't do anymore, but they used to throw garlands and people used to snatch the garlands. Of course, we did not do anything like that. हमें पता ही नहीं था. But that same Prabhuji got me the Pavitra, the nursing kavach thread wala. He got it and he said, this is from the neck of Radharani. Yeah, she's wearing. I got a green and a braided one, the green and black, that was. And he said, this is from the neck of Radharani. This is for you. I got that. I did not get a flower garland, I got that garland. So I brought that home. And he told me that ऐसी 16 माला आप करोगे, so definitely you'll be on the track to meet Krishna. So we bought the mala and I started chanting 16 rounds from that day onwards. There is, and then the story came that I was going to Punjabi Bagh temple that was near my home. I'd never been there. So I started going there, and within 2 months, like it was like we had been chanting for 2 months. And Guru Maharaj is in those 2 months, like May, June, July, Guru Maharaj remains in US. He was in US and Russia. He came in August back. So we were just in the temple. I didn't know who sannyasis are. I was still chanting only. Going to the temple, chanting, coming back, attending the arti, attending the evening program, listening the evening class, coming home. That's what. So we went to the temple, me and my Prabhuji, and we were there. And Guru Maharaj had gone inside to take darshan. I didn't know he's a sannyasi, who is he, that's all. But he came out. He was having darshan. He came out. He had a flower in his hand, the altar se mila tha. So he was about to turn like this. I was standing there only. He turned at me. I stepped, aage chale gaye. He looked back. He came to me. He gave the flower to me. He went away. I got that flower from him. I came home. Next day morning, it was Sunday. It is Saturday program we had there. Sunday morning, children were at home, so I did not go. I used to go in the evenings. So I did not go to the temple at 9, 10. But Sundays, for my children, they love the khichdi prasadam, the food for life, the khichdi. It used to come from the temple. My husband used to go. It was a routine every Sunday. Take the box from home, get it filled with khichdi and bring home. Then kids used to have that prasadam. So he had gone to the temple and Guru Maharaj he was staying the night there and he was there in the room.
So the president of the temple, he took Prabhuji to Guru Maharaj. So Guru Maharaj spoke to him, and then my Prabhuji said that my wife also chants 16 rounds. So Guru Maharaj said, I would like to meet her. So Prabhuji called me, and my husband, he called me, and I said, my Prabhuji said, there is a sannyasi here, they want to meet you. So can you come if I send you the driver? I said, kids are at home, and it will take at least 15-20 minutes for me to get ready and come. So he went back to Guru Maharaj and he said, I didn't know who he is and how big he is, what his stature is. But he asked Guru Maharaj that she can come only for like after 20 minutes. Guru Maharaj said, okay, I'll wait. like I came to the temple after 20 minutes. And then Guru Maharaj gave me at least half an hour to 1 hour. He listened to me, he talked to me. I was carrying a diary with me. I used to keep a diary with the quotes of Granth Sahib in it. So I just spoke to him, and then he really liked it, what I was doing. And he said, keep it up, keep on doing. And then I got so much enamored with him. That is the mercy of his that उस दिन के बाद में I could not leave him. It was like I was talking to my own father. It was exactly my father sitting with me. Until date, he does so. My children say that. That the way you talk to the earlier days when my children were small, now they've grown up. My daughter is 35 now and son is 30. But then when they were kids at that time, daughter was hardly 11, 12 years old and the son was 8 years old, 7 or 8. So वो ऐसे ही कहते थे, you talk to Maharaj as नाना जी से बात कर रहे हो. So I said, yeah, he is your grandfather. So it is, the journey has been like that. He has always given me so much of love and affection. I've taken so much of time telling all this. Really inspiring. He's been very loving and caring for me always. Then he said, he gave me initiation. My initiation part was very interesting again because I used to never like my name, the Sikh name what I have. I never used to like it. It's Randeep Anand. It's Randeep Sethi. So I used to fight with my father for that. I said, why have you kept such a name for me? I don't like this name at all. He used to say, change it, but I said, I can't now with all the degrees in this name. How can I change the name? So when the initiation was going to happen, so I knew my name would be changed now. I knew that it would be from R. It's Randeep, so definitely with R something will come up. So I wanted to have Radharani's name. I was very greedy for that. I was very, very greedy for that. I prayed to Radharani constantly. My children knew, my husband knew that I am craving for this name. But then at the same time, I was telling myself, if Guru Maharaj does not give this name, I should not get disappointed. It's up to him whatever name he gives. But then I was praying to Radharani, please, please. While initiation, I chose, especially at Radha Parthasarthi, I chose where Radharani was directly in line with me. And because I was looking at her all the time, I said, you have to do it. I was telling her all the time, I want your name. You have to do it. And you won't believe it, when the initiation ceremony happened, Guru Maharaj gave my husband the beads. He said, your name is Rasapriya Das. And he gave him a slip with all the detail on that. The name means you're servant to the Lord of the dances. And he was given that. After that, when my turn came, Guru Maharaj said, your name is Radhika Kripa. And and then he did not give the slip to me. He crushed it in his hand and kept it. I said, now this was so intriguing for me again. I said, why did not he give me the paper, the meaning? Then I could not first believe my ears. And my name is Radhika Kripa. Like, I could not believe it. So I walked where there was a list after the yajna. I walked to the wall where the list was put on the bulletin board. The list was there with my spiritual name and my material name. I walked there and I was shocked. In front of my name, it was written Rasa Mandali Devi Dasi. And I was looking into it, and in the meantime, Guru Maharaj came and stood next to me. And he said, what are you looking at? I said, Guru Maharaj, is this my name or the one you gave me? That's my name. He said, your name is Radhika Kripa. That gave me goosebumps. Then I could not still believe it. Then I asked Guru Maharaj's servant. He was a Russian boy, Balaram. He was like my own son. I said, Balaram, I want to know when my name changed, when this happened. He said, I don't know. It
it was 2-3 days ago, your name was shortlisted as Rasamandi Dividasi. And I don't know why Guru Maharaj changed it on the Vyasasana. I have no clue to this. So this is how Radharani speaks through the Guru. And either my faith got strong. So likewise, so many things have happened. Then my faith became more stronger with every moment of life. So there are millions of stories I have, but then I won't take your time to tell them all because many recently many people came to me, oh my God, brothers and all. They said, please pen them down, write them down. I said, I don't want to glorify myself. So they said, no, we want to listen. We want to listen about Guru Maharaj. So then I asked Guru Maharaj, should I write them? He said, don't be fictitious. I said, okay, Guru Maharaj. As long as you're not fictitious. I said, I can't write fiction. He just laughed away. He's got a lovely sense of humor. He's my father, I know. So it is very, Prabhuji, I'm so grateful to him. I'm grateful to Srila Prabhupada that he gave me such a lovely father, my spiritual father. And this journey is very beautiful. When we chant and we preach, we forget everything back home. I don't remember anybody at my home when I'm preaching. I just forget. And where I got so many children, so many daughters. Like my daughter, she's an online progeny for me. And she is my daughter in Delhi. She's very much envious of her. She would say, you talk to her so much, but you don't talk to me. You don't call me up even. So I said, what to do? I have got so many daughters now. So this will come in the video. It's coming. They must be watching. Many are watching. So when so many, I preach in Tokyo. There is a girl. She's become my daughter. Like she says, she's Maki Yoshikawa. So I tell her, you are my Japanese daughter. So there are many children. You are an international mother. Yeah. Yes. Srila Prabhupada makes one a mother immediately. One comes to ISKCON, becomes Mataji immediately. So it's very nice, Prabhuji. So I hope I could satisfy some of you with the answers. So I have to pray to everybody. Yes, Pani piyo chankar, Guru karo jankar, and the Gurus are tried and tested. They are actually the life and soul. That's it. Even I have met Radhanath Maharaj many times. He knows me. I met him in London also. I met him in Jew also. I met him in Vrindavan also. And Jayapataka Maharaj. Jayapataka Maharaj tells everybody she's my favorite Shiksha disciple. I've got videos with Jayapataka. I used to shoot a lot, videography in 2001, 2002. In Mayapur Parikramas, I used to run ahead and make videos of all the sannyasis. And lovely moments I've captured of Jayapataka Maharaj. They are on the YouTube also, where he says, "Oh, Radhika Kripa, you're spying on me." I said, "Yes, Maharaj." He's so jovial, very nice. Which year you got the initiation? 2001. I joined in 99. Then 2001, Guru Maharaj said, "I'm giving you initiation." We are very fortunate to be coming to contact with you today and to hear this from you. Yes, Prabhuji, thank you so much. It's been a treat. It's been a treat, not just for the years, but for the entire personality. I mean, it is like coming into contact with the truth. Yes, Mataji. Want to take the holy name, who want to chant the holy name. Yes. One needs faith, isn't it? Yeah. So how to develop that faith? Can you close It's faith actually comes more you listen. That is why Shravanam Kirtanam Smaranam. That is why the Gurbani even says this. Suniye, kariye man rakhiye bhav. So the bhav comes when you listen. When we listen more and more, like जितना सुनेंगे उतना ये अंदर जाएगा, उतनी सफाई होगी, उतना faith strong होता जाएगा. पहले तो हल्का सा विश्वास होता है, तभी भगवान ने कहा है कि पहले faith करना पड़ेगा. First you believe in me, then you will see me. साइंस कहती है पहले हम साइंस को मानते हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं कि साइंस कहती है पहले मैं दिखा रही हूँ, अब मान लो. साइंस की कसौटी पर परखना है सीइंग एंड बिलीविंग. बच्चे कहते हैं हमें दिखाओगे तो मानेंगे भगवान है कि नहीं. बट द स्पिरिचुअल लाइफ इज उल्टी है. इट्स ऑल द रिवर्स. फर्स्ट बिलीव एंड देन यू सी. द फेथ कम्स बाय लिसनिंग. जितना हम सुनते हैं, जितना भक्तों के संग में जाएंगे, जितना सुनेंगे,
अगर घर में अकेले कमरे में बंद हो जाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, भक्ति होगी ही नहीं, फेथ आएगा ही नहीं, फेथ जो था भी चला जाएगा। फेथ जन्म ही लेता है भक्तों के संग में. We have to sit and listen to the devotees, sit with them and chant, get inspired. That is why during the lockdown, it so happened that I took it on my responsibility that when people were suffering at the moment, they were actually in fear and anxiety. Everybody was so much of fear and anxiety. Ab corona aa gaya, ab kya hoga? So I took it to my responsibility. My husband also, he's another person who actually strengthens me a lot. वो बहुत मुझे pam करते हैं, push करते हैं. So he said, why you should give lectures, go online. I said, I I have I have a habit of speaking with people around me. But it's very funny for me to just sit in front of the laptop and speak when nobody's there in the screen and I'm just speaking. He said, you have to do it because people can't move out and you have to give this to them. And it such happened that I started speaking and you won't believe 800 people used to come and watch me there and they started interacting with me. These names I'm talking, these people, they are all from there. I used to read their names every day. I used to see who all are coming regularly. And out of these, I when I used to take the few names, they were waiting and I used to read the names and जब रोज रोज नाम लो तो याद हो गए ये नाम तो रोज आते हैं ये लोग तो रोज आते हैं. Boy, there's a boy from Mauritius. He joined me. And these all what happened ये सुन सुनकर ही इनका फेथ आ गया. ये इस्कॉन में नए हैं, इनको इस्कॉन की एबीसीडी नहीं पता थी. और जब इन्होंने सुना, रोज सुन रहे थे, उन लेक्चर्स को सुना, उसके बाद में मैंने इनको कहा कि यू जॉइन मी, वुड यू लाइक टू जॉइन मी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप? और immediately so many phone numbers flashed out on the YouTube and on the Facebook. My daughter-in-law, because I could not jot down all the names, she sat down with a diary. I still have the diary. She jotted at least 600 names in them. She put them and she started feeding them manually in the phone. We made groups, devotional groups. Guru Maharaj asked me, what have you named your groups? It was just out of blue, I had named them devotional groups. I didn't have anything in mind that what I'm going to do with them. But look at the spiritual master who immediately asked me, what have you named the groups? I said, devotional groups, Maharaj. So मैंने कुछ ऐसे सोच के नाम ही नहीं दिया था, वो तो अपने लिए दिया था कि मुझे पता रहे कि कौन कैसे आया. I named them like from Facebook, from YouTube, like that, just to know who was from where. And then the WhatsApp groups came up. Then I asked them, would you like to do chanting with me? I taught them chanting on the screen. And they said, yes, please chant with us. I started chanting around with them on the YouTube without seeing their faces. I didn't know who was watching me. And then I said, okay, now I'll put you all together in a WhatsApp. Let's start a Zoom session. Then the Zoom had come. So they said, yes, we want to join on the Zoom. I said, most welcome. Then we started the Zoom sessions and they said, we want to chant with you. So I said, fine. 5 o'clock in the morning, first thing. That will be. I will not change the time. It will be 5 o'clock in the morning. Join me for the Zoom. We have more than 100 people that join in for the chanting on the Zoom. And within 10 days, we are going to complete full 1 year of the Zoom session. Regular 5 a.m. they are there. Yes, from Mauritius is like it's 1.5 hours behind. So ours is 5, theirs 3:30 in the morning. He joins us from that time at 3:30 in the morning. And then we have from UK. It's midnight for them. It's 1 o'clock there. They join us. They take an afternoon nap and they say, we all want to be up at 1 and chant with you. So likewise from Canada, from Australia, they join us. And then Guru Maharaj said, Radhika Kripa, do book marathon. There was the Bhagavatam marathon came up in 2021. That was a new thing for us when the Bhagavatam marathon was there. Guru Maharaj called me and phoned me and he said, Radhika Kripa, I want you to do the marathon. 1,000 Bhagavatam sets I want you to do. I said, Maharaj, that's a lifetime target, 1,000 Bhagavatam sets. I said, anyway, Maharaj, if you have said it's lifetime, whether it takes full life, I will do it. I promised to myself कि पूरी जिंदगी अब भागवतम ही सबको बोलना पड़ेगा कि लो भागवतम लो. And then you won't believe it, in 2020 we did 450 Bhagavatam sets and 6,500 Bhagavad Gitas when the Bhagavad Gita marathon came, all online with all of them. And this year when 2021 came, so I had that target still in mind, 1,000 we have to finish. So I said 650 are still to do.
We have like it's 450 or 600 more we have to do. So we had in our groups done 300. I gave to the temple that I will do 300 till. And we finished 320 Bhagavatam sets within 1 month of the marathon, like 15 days of marathon maybe. We had done 320 Bhagavatams. And the Mohanuba Prabhu, immediately the president of the temple, I said, Guru Maharaj announced it. Radhika Kripa has done 320 Bhagavatam sets. And Mohanuba Prabhu said, now it's double it now. I said, I have to double the next year karna hai. He said, no, this year. And you won't believe it. Within another 15 days to 1 month, we did another 300 sets. We did 626 sets of Bhagavatam this year. And 14,500 Bhagavad Gitas with 200 Chaitanya Charitamrita sets. Guru Maharaj, it's all his powers. They work here. So Guru Maharaj this year said, they have promised now to double their quota. I said, no. So this is all his mercy, So there are many, many more stories, but I don't want we'll leave something for next time. All throughout we have been talking to you, and never once I even looked at the watch. What is the time? Yeah. Time became conspicuous by its absence. That means you actually transported us to the spiritual world. That's what I can say. I myself went there, Prabhuji. I don't look at watch when I'm talking about Guru Maharaj. I don't know how time flies. It's often like that. Me and my Prabhuji, when we drive, he might be listening. When we drive down in Delhi also somewhere to the temple, anywhere we are going, when we just talk about Guru Maharaj, the time is actually how it flies. We don't know, both of us. We only talk about his glories. We talk about what our experiences with him. We just repeat it again and again. And we love to repeat it. Material world is such a way where people get Distracted. Yes. So, and attachment also is, but how to come out of this attachment and this distraction? Mataji, यही formula है. Talk about the spiritual masters singing the glories of Krishna, singing the glories of the spiritual master. I tell you, the attachment to the world, it finishes. सिर्फ duty रह जाती है वहाँ. It's just the duty you have to perform. और वो I tell often कि बच्चे हो कुछ हो, पहले माँ बाप रोते हैं बच्चा नहीं हुआ. जब बच्चा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कहते हैं अब ये जाता क्यों नहीं है. अब ये बाहर जाए. अब हमें चैन मिले थोड़ा. तो एवरीबडी इट्स द सेम. वो हर किसी की अपनी लाइफ है. हम सब चाहते हैं कि हम जो हमें अच्छा लगता है हम वो करें. So when we talk about Krishna, it gives so much of bliss, इसमें happiness नहीं है, bliss आता है. When we talk about the spiritual master and we talk about all these, so it's the bliss that comes. वो bliss जो है, अभी आज जैसे मैं गुरु महाराज से मिली, I said, Maharaj, I'm going to, Prabhu ji का नाम लिया. I said, I'm going there because but last time they did a big program. It was in a temple with 300 people were there. But this time, बहुत short notice था मेरा भी. So within 2 days, I don't know वहाँ कितने होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे. I have no idea. So Guru Maharaj said, it doesn't matter. सिर्फ एक भी होगा तुम्हें जाना है. If only one person is there, if there are only walls also, you have to go. Your job is preaching. So Prabhupada said, even walls are there, you should go. I said, yes, Guru Maharaj. That only keeps him motivated throughout the world, कि कुछ भी होगा. Then Guru Maharaj told me, I'm international preacher I became because he said one day, I want you to travel all over the world and preach. Radhika. You have my blessings to travel all over the world and preach. Anywhere on this planet, he said, not the earth even, he said, anywhere on this planet the word came out. So we ended here now. Thank you, Prabhuji. Thank you very Thank you much. so much. Shri Prabhupada ki jai. Shri Bhagavad Pad ki jai. Shri Gornitai ki jai. Shri Radha Bharata Sarthi Bhagwan ki jai. Shri Radha Gopinath Bhagwan ki jai. Lord Premanand. Very, very good. Jai. Thank you. So, nursing Aarti, I'll give you this. I could not do.